ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैव उपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दसाम्बरे वनो सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्धृतं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणाम गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। उसमें 49वां अध्याय में हम जो कल सब बहुत विचार कर रहे थे समय के ऊपर, समय और मन। ये जो मन है ये अंदर बाहर, मन तो सीधा मन नहीं, मन का अनेक रूप है। कल इसी के ऊपर जो कुछ नाम रूप है सब मन का ही है। ये सब हम कल विचार कर रहे थे। साधारण दृष्टि से देखने से मन भी अनेक रूप में कैसे दिखता है, वही मन सूक्ष्म होने से जो रूप धारण करता है, स्थूल रूप से वो और दूसरा रूप बन जाता है। जैसे जल बहुत सूक्ष्म हो जाएगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बदल जाता है, और वह भाप के दृष्टि से रूप से दिखता है। और वो अगर स्थूल हो जाता है, बर्फ का, पत्थर का फिर एक टुकड़ा बर्फ के रूप में दिखता है, तो वही एक ही जल का ये अलग अलग जैसे अवस्था को हम देखते हैं, वैसे ही मन का भी है। मन को भी ऐसे ही समझो। अति सूक्ष्म जो मन की स्थिति है उसी को हम प्रज्ञा, धारणा, धृति इत्यादि नाम से कहते, मेधा इत्यादि नाम से कहते हैं। और वही मन जब केंद्र से ज़्यादा बाहर चला जाता है, फैलता हुआ स्थूल आकार को ले लेता है और अंदर से बाहर चलता है, बाहर से अंदर आता है। कैसे? इंद्रियों के माध्यम से और वस्तु के साथ संबंध बनाने के लिए अंदर बाहर होते रहता है। इसीलिए वो मन जो है वो सूक्ष्म मन से बहुत बहुत अलग है। और वो जो सूक्ष्म मन है
वो बोधात्मा कहा गया उसको। मेधा, मेधावी बच्चा है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ट्यूशन, इंट्यूशन, या हम कहते हैं सुप्रामेंटल स्टेट, ऐसे ही कुछ कुछ बोलते हैं जिसको हमारे संस्कृत भाषा में कुछ ऐसा ही बोले हैं जिसको हम साफ समझ सकते हैं। जैसे मान लो स्थिर पानी के ऊपर हम अगर एक छोटा सा पत्थर डाल दिए तो साथ ही साथ वो पत्थर उसमें विकार पैदा करके तरंगों को सृष्टि कर लेता है। वो तरंगे जहाँ पत्थर गिरा था वहाँ पहले जितने छोटे और जितने गोल बनते हैं, वो दूर जाने से वही तरंगे बहुत बृहद आकार को धारण करते हैं, बड़े बड़े लहर बन जाते हैं, बहुत सारे परिवर्तन उसमें देखा जाता है। इसी प्रकार मन जहाँ स्थिरता, जो हृदय आकाश जिसको हम चिदाकाश कहते हैं, चैतन्य रूपी आकाश है जो अत्यंत स्थिर है, वो स्थिरता जब किसी भी हालत में अस्थिर हुआ करके दिखाई पड़ा, वो अस्थिरता का नाम ही मन है। इसको भूलो मत, अस्थिरता का नाम ही मन है। उसी अस्थिरता का नाम ही समय है, उसी अस्थिरता का नाम ही प्राण है, उसी का नाम प्रकृति है। उसी को अलग अलग दिशा में अलग अलग कार्य संपादन करते हुए उसका विकार ही कार्य है। तो वो अलग अलग दिशा में अलग अलग रूप से ये काम करता रहता है। इसी को हम संसार के नाम रूप ही समझते हैं। वो सारे चीज एक हृदय का केंद्र में सब स्थिर रूप से सब कुछ है, और अस्थिर हुआ तो ये सब अनेक नाम रूप धारण करके अलग अलग रूप से अलग अलग दिशा में अलग अलग ढंग से सब अपने परिवर्तन को दिखाता हुआ, विकृत होता हुआ कार्य कारण अथवा कर्म कर्मफल अथवा कर्ता क्रिया और कर्म इत्यादि अलग अलग रूप से वो दिखाई दे रहा है, और उसमें कोई अंतर नहीं। उसी का नामकरण हम अलग अलग रूप से करते हैं। जैसे मान लो कोई कहा मन, कोई कहा प्राण, कोई कहा शक्ति, कोई कहा ऊर्जा, कोई कहा शब्द, जो जैसे नाम दिया उसमें कोई आपत्ति नहीं। चीज़ तो एक ही है। चीज़ क्या है? अस्थिरता। स्थिरता में अस्थिरता, वो अस्थिरता में अनेक प्रकार का विकृति दिखाया गया है। विकृति कैसे? जैसे एक तरंग दूर जाते जाते उसका आकार, उसका कार्य शैली और उसका प्रतिक्रिया इत्यादि अलग अलग हो जाता है। ऐसे ही समझो, ये जो हमारे हृदय का स्थिरता जिसको हम चिदाकाश कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वो जब अस्थिर दिखाई दिया, अस्थिर हो ही नहीं सकता है, वो अस्थिर दिखाई दिया तब फिर नाना रूप को धारण करता है, नाना अनेक किस्म का नाम को भी धारण करता है। अस्थिर क्यों नहीं हो सकता है? दिखाई दे रहा है सब अस्थिर, और आप तो यही भाषा में कहते हैं अस्थिरता का नाम संसार है, तो क्यों नहीं होगा कहते हैं। भैया अस्थिर तो किसको कहेंगे?
अस्थिर जल मान लो स्थिर था और अस्थिर हो गया। अस्थिर हुआ तो हुआ क्या? क्या जल बदल गया कुछ? जल में कोई विकार आ गया सचमुच क्या? जल अगर तरंग के रूप में दिखाई दिया, क्या जल तरंग बन चुका है और जल का विकार सचमुच हो गया? जल तो जल भी अभी भी तो है ना। हाँ, तरंग के रूप में जल अभी भी जल है, बुदबुदों के रूप में और वो आवर्त के रूप में, तरंग के रूप में, सब रूप में जल तो जल ही है। जल का कोई विकार नहीं हुआ है। जल को देखोगे तो सब जगह पर जल, सब जगह पर मौजूद है। तरंग में भी जल है और बुदबुदों में जल है, आवर्त में जल है, फेन में जल है। इसी को किसी ने कहा, देखो पत्ते में राम, देखो पेड़ों में राम, देखो फलों में राम, राम राम राम, है राम 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 राम। इसी को तो कहा। सब जगह पर एक ही चीज़ है। हमारे दृष्टि में फर्क होने से, हम इसको अलग अलग दृष्टिकोण से, हमारा दृष्टि में दोष होने से, दोष दृष्टि से ही हम इसको ऐसा देखते हैं। जो विचार से, विचार दृष्टि से देखने से कोई किसी का कोई विकार नहीं हुआ है। इसको हम कल तो देखे थे, आज भी वही चीज़ को हम देखेंगे कि मन अंदर बाहर होने पर भी जो बुद्धात्मा के नाम में जाना जाता है, मतलब बुद्धि अथवा मेधा, प्रज्ञा, इस रूप से जो मन का स्थिति था, वो अंदर बाहर होने से कोई उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, कोई विकार नहीं होता है। वो सब कुछ करता हुआ निर्विकार रहता है। बोधात्मा का कोई विकृति नहीं होता है। इतना साफ साफ समझ लो। दुनिया इसी प्रकार परमात्मा ही है। दुनिया नाम का अलग चीज परमात्मा से नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है। अगर तुम बर्फ का टुकड़ा देख रहे हो, हाथ में ले रहे हो, बहुत ठंडा लग रहा है हाथ को, हाँ मेरे भाइयों और बहनों, उसको जल से अलग ना समझो। वो जल ही है। उसी को वो आज कर रहा है। सवाल उठा, सब जब विकार को प्राप्त होते हैं, हम देख रहे हैं संसार में, वो बुद्धात्मा विकार को क्यों नहीं प्राप्त होता है? वो बदलता क्यों नहीं? अच्छा, और भी तो कहा गया। आप ही तो, आपका क्या वो दर्शन विद्या में आप ही तो कहते हैं, जैसे सर्प, जैसे रस्सी में सर्प को देखते हो तो रस्सी का विकार आप समझते हो, बोलते हो विकार नहीं हुआ, वो तुम्हारे दोष दृष्टि है, विकार कोई नहीं। आभास, आभास शब्द बोलते हैं। आभास जो नहीं है वो दिखाई देना। और उदाहरण उसमें हम बहुत देख लिए हैं। आभास कैसे? जैसे मान लो पप्पू रामलीला में राम का रोल अदा कर रहा है, तो पप्पू को हम राम कह करके पूजा करते हैं। तो क्या पप्पू सचमुच राम बन गया है? कुछ नहीं बना, थोड़ा देर के लिए देश काल परिस्थिति के अनुसार। और
विकार उसमें कुछ नहीं होता हुआ, विकार दिख रहा है, इसको कहते हैं आभास। ऐसा होता हुआ दिखता है। और इसी प्रकार हम देखते हैं मरीचिका में जल, और इंद्रधनुष में 7 रंग देखते हैं, जल में तरंगे देखते हैं, आकाश में नीला रंग देखते हैं। संध्या और सुबह हम आकाश को रंगता हुआ देखते हैं। क्या नहीं देखते हैं हम? जो नहीं है सचमुच, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता है। इसी के ऊपर हम देखेंगे अच्छी तरह कि जो हम नाम रूपों को देखते हैं, क्या वो नाम रूप सही नहीं? नाम रूप तुम ही तो बोलते हो रूप होता है, असीम को असीमित करने से रूप बनता है, और उसका एक नाम होगा। उसका जो चलनशीलता, उसका जो अस्थिरता का प्रकार को देख कर कैसा स्थिर हो रहा है, उसको जब हम कर्म कहते हैं, कर्म का विवेचन करके कर्म के अनुसार उसको नामकरण करते हैं, और वह आकार विशिष्ट एक रूप हुआ, उसका नाम होता है। ये तो संसार आप कहते हैं विकार को प्राप्त होता है, और अभी कैसे कहते हो विकार को प्राप्त नहीं होते हैं करके? विकार को प्राप्त नहीं हुआ करके कैसे किया? विकार को प्राप्त होता है ना? नहीं, 2 दृष्टि है हमारा। हर पल में 2 दृष्टि होता है। एक तो पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा। एक जैसे दिखता है उसका दूसरा दृष्टिकोण ठीक उल्टा हो जाता है। अगर हम कहीं दिन को देख रहे हैं तो कभी दिन के बदले कुछ समय के लिए रात का अंधकार को भी देखते हैं। इसी प्रकार हर चीज़ का उल्टा हम देख रहे हैं। इस संसार में जो चीज़ है उसका ठीक उल्टा उसके साथ साथ रहता है। तो इसी प्रकार हम विकार मानते हैं संसार में, और तुम कहते हो विकार को प्राप्त नहीं होता है। कैसे नहीं होगा? तो 2 दृष्टि, अभी जैसे हम कह रहे थे, 2 दृष्टि, एक तो सामने से देखो और एक पीछे से देखो। 2 दृष्टि कैसा? एक दृष्टि तो हम सांसारिक दृष्टि से देखते हैं, जिसको हम रिलेटिव कहते हैं, रिलेटिव व्यवहारिक जगत। और उस दृष्टि से हम जो देखेंगे, परमार्थ दृष्टि से वो ऐसा नहीं दिखता है। इसीलिए हमेशा परमार्थिक दृष्टि तो विचार के बाद मिलता है, और सांसारिक दृष्टि तो सदा सर्वदा हमारा व्यवहार में हम इस्तेमाल करते हैं। हम नाम रूपों के साथ व्यवहार करते हैं। परमार्थ दृष्टि से नाम रूप है नहीं, हम परमात्मा के साथ ही व्यवहार तो होता नहीं, उधर परमात्मा को देखते हैं। इतनी ही है। 2 दृष्टिकोण हमेशा है। और देखो, जैसे पहाड़ के नीचे जो रास्ता जा रहा है, मोटर रोड जा रहा है, उसमें तुम जा रहे हो तो तुम्हारे जो दृष्टिकोण होगा, चोटी में जो बैठा है व्यक्ति, उसका दृष्टिकोण वो नहीं होगा। वो उस ढंग से नहीं देखता है। चोटी में जो बैठा है वो तो एक पल में, एक नज़र में इतनी सारा देख लेता है, जो पहाड़ के नीचे चलने वाला का अतीत भविष्य वर्तमान सब इकट्ठा है। वो चोटी में बैठा हुआ व्यक्ति के लिए वर्तमान है। जो निचले व्यक्ति का भविष्य है, उसको वो वर्तमान में देखता है। ऊपर बैठा हुआ आदमी वर्तमान में देखता है, उसके लिए भविष्य नहीं है। इसी प्रकार 2 दृष्टिकोण हमेशा रहता है।
एक तो मानसिक दृष्टिकोण जो व्यवहारिक दृष्टि होता है, और दूसरा होता है पारमार्थिक दृष्टिकोण, विचार करके हम जो देखते हैं। इस प्रकार ये जो बुद्धात्मा वो अंदर बाहर होता हुआ भी और दुनिया को बाहर देखता हुआ अंदर फिरी, अंदर उसका स्मृतियों को और उनका संस्कारों को रखता हुआ भी ये विकृत नहीं होता है। क्यों नहीं विकृत होता है, उसके लिए कह रहे हैं ये जो बुद्धात्मा है ये चिदाकाश जैसे विकृत नहीं होता है, और जैसे जल विकृत नहीं होता है, जैसे आकाश विकार को प्राप्त नहीं होता है। आकाश में तुम कुछ भी कर दो, आग जला दो, आकाश को कुछ खूब धो डालो, श्रावण के झड़ियों से आकाश को खूब धो डालो, आकाश का कोई विकार होता है ना कभी मैला होता है ना कभी साफ होता है। तो आकाश के माफी और चिदाकाश के माफी और समय के माफी। समय भी कभी मलिन नहीं होता है, समय कभी विकार को प्राप्त नहीं होता है, हैं? समय कभी विकृत नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? पहले तो हम समय को जिस ढंग से समझते हैं वो तो ऐसा ही नहीं, समय का रूप अलग है। समय को खास करके व्यवहार जगत में हम लेते हैं गिनती से, गिनती करने से समय पता चलता है, और गिनती तभी होता है जहाँ भेद है। दो में जब भेद होता है तब हम गिनती कर सकते हैं, अगर अभेद है तो एक ही रहता है, उसमें गिनती नहीं होता है। भेद पैदा किया तो एक को दो किया, दो को चार किया, इसी प्रकार हम गिनती करते हैं। ये जो भेद है, ये भेद से देश और काल को हम समझते हैं, व्यवहार में इसको लेते हैं देश और काल को, और इसमें परिवर्तन को हम देखते हैं। ये सचमुच परिवर्तन नहीं है कहीं, काल कभी बदलता नहीं। विचार दृष्टि से काल कभी बदलता नहीं, काल कभी खंडित नहीं होता है, और काल कभी मलिन नहीं होता है। काल को कोई पाप पुण्य नहीं लगता है। पाप पुण्य तो रिलेटिव वर्ड में है। इसी प्रकार जो हम देखें, जैसे आकाश को हम खंडित नहीं कर सकते हैं, आकाश को मलिन नहीं कर सकते हैं, सफाई भी नहीं कर सकते हैं, वैसे ही समय भी, समय को कोई मलिन नहीं कर सकता है, विकृत नहीं कर सकता है। और उसी प्रकार जैसे परमात्मा स्थिर रूप से जो सबके हृदय में है, वो अस्थिर होकर के अंदर बाहर होता हुआ दिखने पर भी उसमें कोई विकार नहीं होता। इतना ही कहना है, उसको विकार नहीं होता है। और ये जो समय और आकाश और जैसे और सब उदाहरण दिए, ये विकृत नहीं होते हैं, तो फिर मन भी तो आप कहे थे, मन और समय दोनों में कोई अंतर नहीं। मन भी तो विकार को प्राप्त नहीं होना चाहिए, अंदर बाहर होता हुआ। क्यों नहीं दावा ठोकते हैं? लगाओ एक केस। मन कैसे? मन ही तो समय, मन ही तो परमात्मा, मन ही तो संसार, मन ही तो प्राण, मन ही सब कुछ है। तो आप कैसे बोल दिया कि
मन में विकार हो जाता है। मैं कब कहा? मैं तो ऐसा नहीं कहा। हाँ हाँ आप बोले थे, बोले थे, कब बोले थे? झूठ बोलते हो? नहीं, हम रिकॉर्ड करके रखे हैं। आप बोले थे साधना और कुछ नहीं, मन का सफाई। बहुत आप विचार किए हैं। साधना मतलब मन का सफाई करना। गुरुदेव भी कहे सर्व लव गिव प्यूरिफाई। प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस को साधना कहते हैं। और आप बोलते हैं साधना मतलब सफाई करना, ब्रेन वॉश करना। अरे आपका वो गोल्डन डस्टबिन के बारे में आप इतना विचार किए तो कैसे कहते हो विकार को नहीं प्राप्त होता है करके? विकार को प्राप्त होता है मन, मन भी, इंद्रियां भी। और ये तुम्हारे योग शास्त्र में सब जितना बोले हो जम नियम इत्यादि, ये तो सफाई का काम है। ये तो धोबी है। इसमें भी दो पक्ष है ना, एक छोटा, एक मैं वाला और एक ऊपर वाला। हाँ उसमें भी दो है, एक कॉस्मिक और एक इंडिविजुअल, ऐसा दो है। दोनों का सफाई, सफाई का नाम साधना, स्वच्छ भारत। तो आप मना कैसे करते हैं? अरे भैया मैं बार बार कर रहा हूँ, देखो हम व्यवहार में एक दृष्टि रखते हैं और परमार्थ में एक दृष्टि रखते हैं। व्यवहार में मन हमेशा मलिन रहेगा, क्योंकि अंदर बाहर या अनेकता में विभाजित होना, चंचल होने का नाम, अनेकता में विभाजित होने का नाम मैला है। क्यों, कैसे? जैसे मान लो दूध में पानी मिला दिया तो आप कहते हो ये शुद्ध दूध नहीं है, ये मिलावटी है। मिलावटी का मलिन कहते हैं। और शुद्ध प्योर मिल्क किसको कहेंगे? जिसमें कुछ और दूसरा चीज़ नहीं होगा। ऐसे ही सब चीज़ें। प्यूरिटी मतलब वननेस, इसी को आप समझना। तभी दुनिया में अनेकता के कारण इम्प्यूरिटी है कहा गया। और ये अनेकता को एकता में लाना, इसी का नाम साधना, इसी का नाम प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस। इसी इतने तो कहे, कौन सा अलग बोलती है? जो कहते हैं साधना में सब सफाई करना, मन की मन का चंचलता को निवारण करना ही, मन का स्थिरता लाना ही सफाई है। सफाई का ये मत समझो सचमुच कोई गंदगी, जैसे एक से दूसरा अलग है, ऐसा नहीं। चंचलता का नाम गंदगी और स्थिरता का नाम सफाई। इतने ही है, इसको भूलना नहीं। बोलते बोलते अनेक किस्म के शब्दों को प्रयोग करते हैं, इसीलिए तुम्हारे मन में सब शंका पैदा हो जाता है। ये शंका का अवकाश नहीं है। शंका हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाषा अलग है, परिस्थितियाँ अलग है, और जो विषय वस्तु बदल जाता है, अलग अलग हो जाता है। इसीलिए अलग भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे हमारे व्यवहार में देखा गया, एक चीज़ को कितने ढंग से हम बोलते हैं तभी समझ में आता है। तो व्यवहार के लिए तो ऐसा बोलना पड़ता है भाई। लेकिन सचमुच में, सच में कोई मलिनता दो को नहीं कहते हैं, मलिनता अस्थिरता को कहते हैं।
दो होता नहीं, एक ही दो जैसे दिखता है, ये है सच्चाई। और गंदगी क्या है, झूठ क्या है, दो होगा तो चार होगा, और इसको गंदगी कहते हैं, अनेकता का मिश्रण को गंदगी कहते हैं। यही है व्यवहार, दुनिया में हम इतना जानते हैं, इतना सीखे हैं, और इसको हम व्यवहार में लेते हैं। और यह विचार करने से और कुछ दिखता है, विचार करने से कोई चीज़ का विकार होना असंभव है। विकार होने से, भेद पैदा करने से तभी एक अनेक में बदलेगा, और अनेक कोई एक में आप सफाई करेंगे, परंतु एक कभी अनेक हो ही नहीं सकता है विचार दृष्टि से। और अनेक दिखता है पर है ही नहीं। इसी प्रकार जब हम पहुँचते हैं परमात्मा में, तब परमात्मा सदा सर्वदा सदा शिव है, हमेशा साफ है, उसमें कोई अंदर बाहर एक खाली दिखावटी है, अंदर बाहर नहीं है। सीमा असीमता ये भी खाली अर्थ है, इन शब्दों को हम व्यवहार करते हैं व्यवहार जगत में, जिसमें परमार्थिक दृष्टि से ये सब कुछ नहीं है। परमार्थिक दृष्टि किसको कहेंगे? विचार के अंतर अनंतर, विचार के बाद हम परमार्थ दृष्टि को देखते हैं कि असलियत क्या है। सॉरी माता जी, डोंट बी सॉरी। The golden dustbin. हाँ, We can hear little bits. the inner self, which is absolutely steady, when it becomes unsteady, then it has to go out, and that unsteadiness, which we call imbalance state, it is all pervading imbalance state. All pervading means from center it projects out in all directions. Center is center, so it has 360 to the power 360 to the power infinity angles and sides. That's how it is all round movement. It is not one-sided in one direction. It is the movement or the imbalance state is in all round angles. That's how it appears to be many, but it cannot be many. For example, we see the rays of sun are many, but the rays of sun is not different from each other, which is called light, ray of light. It is all the same. And when the sun rises, we see, of course it is ever region. It never rises, never sets, but relatively for us, it rises and sets. The moment it rises, it's a light. It's a light we see in all round directions. But in the center, it will be more luminous, and as it is out of the center or far from the center, that becomes more luminous. It is from our angle of vision. So
This we call we name it, we use it in our daily life in different terms. That's how it becomes complicated to understand. But really, when we understand everything analytically on the basement of balance and imbalanced state. Imbalanced state is all whatever you can think, all the manyness, all the word world or sound world or changing world or world of energy or changing phenomena, whatever you say, it appears to be, but really there is no such thing. So why it appears and how it appears? It is because of your faulty vision. Vision is of two types. One is ordinary common vision, relative vision, which is subject to change. The other is ultimate, means all-round vision, which never changes. So from that angle, nothing happens. Everything is as it is. There is no everything, there is no one thing. We see the thing as it is. There is no transformations or modifications or changes, nothing is there. But relatively, because of our limited vision, we see everything limitedly. That's how we take it as if it is changing. And everything is multiplying, changing. So, purity means oneness. Impurity means adulteration, means mixture of many things. That also, from analytical point of view, we see manyness is nothing but restlessness, and oneness is nothing but restfulness. When you are many, you are more restless. When you are less in number, you are very steady and calm and quiet. See, 100% get together to go somewhere for a trip somewhere, and to be collected at a place to catch the vehicle, it takes so much time. Somebody will be somewhere, somebody will call somebody. It takes so much time. But if you are all alone, there is no question of taking time. In this way, everywhere we see, manyness is cause for all the problems. That is restlessness, and that also is known as passage of time, or the mind changing fast, restlessly, etc. All these. What we mean from a relative point of view, we see the world something else, and from analytical ultimate point of view, when we see there is no manyness, there is no transformations,
There is no impurities anywhere. It is all the time as it is. It cannot be impure. And that's how the inner self, which appears as if it is agitated and going out and coming in every moment in the form of senses and mind, in reality it never gets polluted. Nothing happens. And that he gives the example just as the sky is in and out everywhere. Does it get impurity? Your inside room sky gets little smoky, isn't it, when you burn so many candles? But outside sky is always clear, isn't it? Can the sky become impure or dirty? Can you make it pure by washing or doing something? Sky is so subtle, it never can get dirty, never can be purified. This purification or impurities, all these words, we use it in the relative world. The gross things which are perceived by the gross senses and mind, that is how we call it brainwashing or purifying the mind or senses. For example, let us analyze. You went to a muddy, dirty guard, some Ganga bank, some place. It is muddy and dirty. It is so dirty. When you come, you tried to go to Gangaji and came back, your cloth, your legs, your sandals, they get dirty. You wash it, isn't it? This is called cleaning. Everybody knows we do it. What happens really? When we wash our clothes or we sweep our floor, what happens? Suppose we say cloth has accumulated some dirt, we have to put it in some detergent and some powder or something and water, little hot water, anything. You are washing it. Then what happens? After washing, the dirt goes out and cloth remains as it is. So now if you sincerely look at the cloth, how do you feel? Did it get dirt? If it got dirt, then how can it be without dirt? How can it be? Now it is as it was. In between, something was seen on it which is not seen now. That we call washing, cleaning.
things are as they are. What you call dirt, say little mud. If you put some ink to mud or clay, that becomes colored. But if you sincerely, analytically, chemical analysis, if you look at it, they never get together. They are always different from each other. The dirt, so-called dirt, and the other, the original one, they never can get together. They come, space-wise, they come nearer to each other, but they cannot become one. When you analyze it, see, when we see an object, the object is seen because of our senses get contact with the object, and then that information, that return contact which is collected in the process, that collection is known as the knowledge of the object. That is called perception. So, just as the wave of the mind goes out through the senses and gets contact with the sense object and comes back again, the same wave comes back again to the original place where from it was delivered. It comes back to source and collects some information. So see this, analyze it. When the wave, thought wave, by the medium of the particular sense, via particular sense, goes and gets obstructed by the object and comes back, it brings some informations, local informations of the object, partial, local, little information it brings because it gets contact for a fraction of a moment and then it has to come back. So in this process, what happens to that wave and what happens to that object? They never get transferred anything, nothing happened to both, neither to the wave nor to the object which it had contact. Because the structure of both, they are different from each other. Chemically, they don't get together. Chemically means the atoms which constitute the body of the wave here and they are the body of the object, they never get together. If the atoms they get together, that is called chemical accumulation, organic chemistry, that is 2-3 atoms get together, make a molecule of the particular object, or when different kinds of atoms get together, they chemically they get together and make the molecule of some other
compound, we call it compound object. In this way, the mixture or transformations as per the modern science and also as per the philosophy, nothing happens what we think that relatively, that is not really that, no mixture, no nothing happens. Some dissimilar things when get together we call it dirty or garbage, which is not wanted. Analytically. And that's how all these transformations, it can only happen when the atom enters into the other atom. Then only. And there should be nuclear war. And then only everything can get together and there will be disaster. So, in really analytically, when we see all these, just for a moment, something is seen as something or the other in some time or other, in some condition or other, by someone or other, from some angle or other, and that is understood as something or other, and that is called behavioral world. Nothing is clear anywhere. When this only we can say when we analyze everything minutely from all round ways, then only it is possible. Or else in our behavior, daily life, we don't go to such depth. Something is coming over something, and that is, we call it a dirt. We should remove it, cleaning. But this is not real cleaning. Real cleaning is steadiness, no movement, and movement is dirty, which creates all these confusions. But still never touching the substance. Nothing can penetrate to other object. They cannot enter into, atom cannot enter to other atom. They just get together. And if you want to drill it and make a hole and push inside one atom inside the other atom, then the whole world will blast. And they cannot, because of many reasons. But gross reasons we can give, just as these modern scientists wanted to blast an atom, and they were afraid the whole world will go to hell. But it didn't happen. What happened, when an atom was blasted, it blasted into many parts, and they named it as God particles. And every particle is always subject to motion. They cannot keep quiet. So, though you have named it as God particles,
We don't agree it is not God, it is world. Whatever is changing, that is called world. God is never changing. Your atom was only a form, the minimum most form of the infinite. That is called atom. And when you say logically, when you say it is the minimum most particle, then how can you make again, how can you blast it? How can you blast it, make still minimum? That's how the minimum most is always minimum most. It cannot, and that's how, because we cannot think of it, there is no words to explain it. That's how in Vedas they say, Anuraniyan, smaller than the smallest. It is only the existence which is beyond our relative approach. We cannot approach it by mind or by any instrument because it is beyond everything in this sense. And that is called absolute equilibrium. That's how, which we know as the heart, absolute steady state of the existence. Though it appears to be out and in every moment, it goes out and comes in our perception world. Nothing happens to it, it never gets polluted or manifold. Nothing happens, it remains as it is. And really speaking, there is no out or in because it is all pervading. Just as I scratched my head by my hand, relatively we can say, I moved from one place to the other place. I moved, but it was not movement. It is, I saw myself in different ways. That's all. Hand is myself, head is myself, and reaching of the hand near the head, that is within myself. It is neither out nor in. It is always in oneness. Body touches the body, that means there is no question of no meaning of touching or doing something. There is no meaning. इसी तरह वो कह रहा है कि जो प्रत्येक आत्मा, जो साक्षी चेतन हम जिसको कह रहे थे, जो मन का, प्राण का अंदर बाहर होने का कार्य को सब देख रहा है और विषयों के साथ संबंध को देख रहा है, उसमें कोई मलिनता नहीं आता है, वो मलिन नहीं होता है, सदा शुद्ध पवित्र. It never gets dirt, though it appears as if it is going out and coming in, accumulating something or discharging something or connecting with something else, but total view says nothing is happening anywhere. Everything is going on inside. Just as the heart, the upper part of the heart and lower part of the heart, they are working all the time.
Some are receiving and some are pushing out. The work is going on within the body, so that we don't say something is going on. When you sleep, do you say, I am working? But the prana and the heart and all the senses inside, everything is working, or else you will die. The kidneys, the pancreas, every digestive system, whole system, they never rest. They are at work. But you say, no, I was resting. Because it is inside, as a total vision, you say nothing is going on. I am resting. From a total vision. But individual vision, every cell is working. So always our visions should be seen by different visions, from all round vision. Whatever we take for granted, this is this, this is this, it is to be seen from all round directions how it looks. So now coming to our objects and contact with the objects. We have relative vision. Relatively, one gets contact with the other by movement. One moves and gets contact with the other object. Both are objects. But really speaking, when we analyze, these objects have some form, some name, which have relationship in both way with each other. But this relationship, this contact, it is under the time, space, conditions, and that's how the contact and discontact, all these, then only we understand what is going on, and the object gets contact with the other object, that is relation, and that's how the whole relative world is going on. But really speaking, from the ultimate analytical view, when you take out the time and space or demarcations, then the one object remains as it is, which is not limited to be called a being, because nothing becomes it. The whole infinite is ever present by all conditions. There is no change in condition, there is no change in any parts, because it is not parts, it is whole totality. It is infinity. It cannot be limited. Limitedness is an idea only, and thereby we create the idea of time and space and conditions which are ever changing. And if we see the basic principle, if there is no limitedness, which is an idea only,
The unlimited is ever present at all conditions, at by every way. So there is no individuality, there is no beinghood, or there is no manyness, there is no divisibility, there is no limitedness. Nothing is possible. Nothing is possible. So from an ultimate point of view, all these are simply meaningless relationship. It is within itself, within the one absolute. So the absolute never gets impure. It is ever pure. And from common parlance, common sense, we can say when two get together, it is called impure. When they remain separate as it is, then they are pure, isn't it? So now, now this one is ever one without a second, because it is all pervading. If something is all pervading, that means it has to be one. If it is not all pervading, then only two is possible. If two are there, one cannot be all pervading. So all these conditions are there logically, and which doesn't allow the one to be divided. One cannot be divided. So there is no question of manyness or relationship or in and out or your impurity or purity or any action or reaction, cause and effect, or any gaps, means differences. Nothing is possible, because one cannot become many. ये जो हम समय को हम कल विचार कर रहे थे, समय और ये मन, ये अलग अलग दृष्टिकोण से हम देख रहे थे। मन एक विस्तार को ही मन कहते हैं, जो केंद्रीभूत सत्य जो सदा स्थिर है, वो अगर बहिर्गति के रूप में दिखाया गया कभी, जिसमें सचमुच नहीं हो सकता। केंद्र तो हमेशा केंद्र में रहता है, केंद्र कभी परिधि में नहीं जा सकता है। केंद्र तो हमेशा केंद्र में रहता है। The axis remains axis forever. It cannot be the wheel or it cannot have any motion. It is the center of all the motions, moving elements. That's how it is called axis. It cannot move. That's how the center cannot move. Center is ever steady, and that is how it is known as the constant, dhruva, dhruv, constant. The constant is ever present in all conditions. And what we see relatively our manyness of the world with names and forms, they are many times we have seen it is because of your faulty vision.
Just as you see two moons because of your diseased eyes, you can see the black spots in the sky, that is your faulty vision. And you see in the mirage there is water, you see the blueness in the sky which is not there. In this way, whatever we do, whatever we perceive in this relative world, whatever we see or whatever we have contact with, everything is momentary and meaningless, useless. They have got no meaning, impossible, no meaning. Something appears to be something else in some condition or other, in some time or other, which you see something as something, at daytime it becomes something else at night. Huh? Something when you see on the top of the mountain, it is something else. That same thing becomes something else at the seashore. Huh? They appear as if everything is changing. And really speaking, the object is object all the time, and what we see, it appears to us as that. This is the point to be noted. The object is as it is forever. It has got no changes because of your vision, your contact with it, which is influencing the time, space, conditions, and your contact. All these are influencing your vision, your contact with the object. That's how the object is something for you which is different from for others. The object is not as you see. It is not so. It is something different from for others. So how can we say this is the world? Your world is different from my world. Shall I come to our relative world? No. It will be dangerous, dangerous. एक बार हुआ ऐसा ही. क्या हुआ? थोड़ा मजाक करो. हुआ क्या? एक बार गांव में मैं भिक्षा करता था, जा करके 2-4 घर से मांग लाता था. गप्पा मारो. तो क्या हुआ, कोई आते थे घर में, खास करके माताजी लोग तो ला कर भिक्षा देंगे. माताजी लोग कोई अगर नहीं है तो कोई ला करके कटोरा में कुछ, महाराज जी लीजिए. भिक्षा माधुकरी करता था. 8-10 साल तक इसी गांव में किया समय. तो एक दिन एक पंडित जी वो धूप ताप रहे हैं, अपने बरंडा में बैठे हैं, और उनके जो बहू हैं, लड़का का बहू, वो मैं जा करके आंगन में खटखटाया तो बहू आ करके मेरे को कुछ दिया. वो कुछ मेरे को पूछी तो मैं उसको बहू माता जी करके संबोधन किया. बहू माता जी, माता जी, ये जैसे संबोधन किया तो पंडित जी मेरे को बोलते हैं
क्या स्वामी जी, ये कैसे आपका माताजी हो जाएगी? मेरे पत्नी भी बूढ़ी भी आपका माताजी है और ये भी तुम्हारे माताजी है, ऐसे किससे है? वो कैसे तुम्हारे माताजी हो जाएगी? मैं कहा भाई आपके लिए बहू हो सकती है पर मेरे लिए तो माँ है ना। अच्छा, वो बोल रहा है सब तुम्हारे लिए माँ है, मेरा बहू भी तुम्हारे लिए माँ, मेरे माँ भी तुम्हारे लिए माँ, सब माँ है। मैं कहा हाँ, तो फिर मेरे पत्नी भी तुम्हारे पत्नी है। मैं कहा जी पंडित जी, अरे देख रहे हो पंडित जी, अगर वो पत्नी है वो सबका पत्नी होगी। ऐसा बिगड़ा पंडित। मैं आग लगा करके फिर चल दिया दूसरे घर पे। आग लगा, वो पूछता है मेरी पत्नी भी तुम्हारी पत्नी हो जाएगी? मैं कहा हाँ, अगर पत्नी है वो तो सबके लिए पत्नी होना चाहिए। हाँ, तुम्हारा कैसे, तुम ठेका ले रहे हो क्या? तेरी है, लगी तीर। हरी लगी तीर, ऐसा लगी बाण। बात इसलिए कहने का दृष्टिकोण, दृष्टिकोण कैसे है? एक स्त्री वो एक किसी के लिए तो माँ है, और जितनी स्त्री हैं दुनिया में, स्त्रियां समस्ता तव दे विभेदा, आया ना इसमें, कौन सा सप्तशती में दुर्गा माता जी का स्तुति है, उसमें बोलते हैं हे माँ, जितनी स्त्री है ये सारा संसार में तुम्हारी तो रूप है, तुम ही तो अनेक रूप में अपने रूप को फैला रखी है। स्त्रिया समस्ता तव दे विभेदा, तुम्हारी भेद तो है अलग अलग सब। तो उस दृष्टि से तो सारे स्त्री जगत सबका माँ है, इसी रूप से तो प्रकृति सबका माँ है, धरती सबका माँ है। इसीलिए तो ये दृष्टिकोण बदलता है, किसका दृष्टिकोण कैसा है। इस दृष्टि से सारे स्त्रियां एक प्रकृति का स्वरूप होने से वो माँ रूप हैं। अच्छा, और सारे संसार को वो देखभाल करती, पालन पोषण करती। इसीलिए कहा गया माँ जो है उसका स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, इसी ढंग से कहा। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से दृष्टिकोण बदलता है। दृष्टिकोण कैसे बदलता है? कितनी बार हम विचार कर लिए, एक वस्तु को अनेक रूप में देखना, और एक वस्तु को विभिन्न समय में विभिन्न लोगों के द्वारा, विभिन्न दर्शकों के द्वारा, और एक वस्तु विभिन्न समय में भी अलग अलग दिखता है, एक वस्तु विभिन्न परिस्थिति में भी अलग अलग दिखता है। एक ही चीज दूसरे दृष्टिकोण से अलग दिखता है, दूसरे समय में अलग दिखता है, दूसरे परिस्थितियों में अलग दिखता है, और दूसरे दृष्टिकोण से अलग दिखता है। कितनी सब बदल जाता है। एक वस्तु कुछ नहीं होता है उसका, वो ज्यों का त्यों है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति किसी का भाई होगा, किसी का पिताजी होगा, किसी का पति होगा, किसी का
भांजा होगा, किसी का बेटा होगा, किसी का पिता भी होगा, किसी का टीचर होगा, किसी का स्टूडेंट भी होगा, किसी का खरीदार ग्राहक होगा और किसी का बेचने वाला बन जाएगा। व्यवहार के अनुसार, समय के अनुसार, कर्म के अनुसार एक व्यक्ति कितने अलग अलग रूप ले लेता है। वही फिर समय के अनुसार भी अलग अलग हो जाता है, वही फिर परिस्थिति के अनुसार अलग अलग दिख जाता है। एक ही चीज There is a temple in Kerala, Swami, Devi temple. Where जी morning she is worshipped as Saraswati, daytime as Lakshmi, and night as Kali. The same idol, बिल्कुल, तीन एस्पेक्ट 3 times. जिसको जैसा दिखता है। तो इसको देखने से असलियत में हम आते हैं, दुनिया में जितने जो वस्तु हैं जिसके साथ हमारा संबंध है, चाहे जीव जगत हो, चाहे दूसरे उद्भिद जगत हो, चाहे जो निर्जीव जगत हो, जिसी के साथ हमारा जो भी संबंध है वो ऐसा नहीं है मेरा जैसे संबंध है वो दूसरे के लिए नहीं, दूसरे का संबंध तीसरे के लिए नहीं, तो उसका हम कैसे मान लेंगे कि ये ऐसे ही है? क्यों? ये सारे देश काल परिस्थिति दृष्टिकोण ये सारे को लेकर के ही एक वस्तु को समझा जाता है, एक वस्तु का नामकरण किया गया, जो वो नाम भी बदल जाता है, कर्म भी बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। इसलिए इसको हम इस रूप से कभी नहीं ले सकते हैं। An object, whatever is seen by you as something, it is differently seen by me from different angle. Same object is seen innumerable ways from different innumerable angles of vision. And same object again is seen by many different objects in different times. Same object in different situations is seen indifferently. So, the object is object. It has got no name, no form, no change, nothing. But the visions change, the angle of visions change, the time changes, the situation changes. That's how we say the object is changing, but not we. Just as you are sitting in a compartment with your friend and talking to each other, and in a train compartment, and the train is moving very fast, and when you see outside, you think you are sitting calmly, but these outside trees and mountains, they are moving back so fast. The nearer ones will be faster than the farther mountains and trees. That's how we see the just opposite. We don't see the reality. That is our habit, that is our mental condition. Mind is conditioned by time, situations, and all these. This is how whatever we see this world as something, it is not so. Not so, finally. The object is object.
It looks like something to you. It looks like something else to me in some time or other, in some place or other. The same object which is so, so useful at South India, Kanyakumari, it is poisonous in Kashmir. Uh, now in Australia, they are using fan and cooler, and now here in Gangotri, they are using the heater. Why? Because the space is cause here for these differences. And time also, sometimes time also works. Sometimes angle of vision works. What happens, you know? These children, when they in summer holidays, they come and they will be doing something. And if they come here for taking food, everybody there, they don't hesitate to do any mischiefs here. They do and do play everything. So they will come and eat, and they will come here and take a blanket and cover it, and their fan will be on, both together. Nutty fellows. They put the fan on, and because it feels little cold, so they will have the blanket on, both together. So it depends upon how you use, how you see it, how what is the time, what is the situation, what are the conditions, and what the uh, other person is having views on the same object. So not only one or two, the whole universe has to come together to have one opinion, then only it will be true. Or else the object cannot be different. It is as it is. Huh? It's still apparent. Yes, this is the world. What we see, what we have as ours. Now, we have one point. From different angles, we were looking at the world and the truth. So one angle was mind. Mind becomes everything and anything. And other angle was sound. Sound differs and meaning also differs. And that's how the world becomes, it takes so many forms. And we saw since 2-3 days we are looking the objects from mind angle, how the mind does, and also time angle. The same object, same thing becomes different according to different times. And this is how, coming to conclusion, the objects never change. Okay? Now we saw angle of vision changes, person changes, and
Everything changes but not the object. Okay? Similarly, if you can make an axis and everything will be going around it, circulating. Anything can be axis. Now time never changes. Other things change. Time is non-changing aspect which we see as if it is changing every moment. Changing is known as time because everywhere we have got differences and we count. Counting is known as time as relative vision. But from ultimate vision, time is neither changing nor it it has got difference within it. It is the absolute steadiness which is not seen properly, which is seen from different angles, by the angle of mind and by the angle of situations. That's how time appears to be changing. In the same formula, we can put everything. Formula is object never changes. So the object is time, object is mind, object is prana, object is any object being. Anything you can put on the formula. That becomes steady and the things around becomes changing. That's how this world is. Neither time changes, nor place changes, nor condition change. And if your gaze, your vision, angle of vision is steady, everything becomes steady. This is the clue. This is the clue. To see the world, to see the reality, to know the truth, you are bound to be steady. That is how the yoga teaches you Chitta Vritti Nirodha. Not only Raja Yoga, all the yogas, all kinds of yogas, their aim is ultimate equilibrium state. That is the aim of all the seers and seekers and practitioners, everybody. We have to keep quiet. That is the absolute silence. That is the language of the absolute. And you will understand everything. That understanding of everything is called knowledge. That knowledge is constant, which never changes. Swamiji, is it possible to be in the world and Not to be worldly. yes, is it possible to be Yes, it is quiet possible. Yes, it is possible. inner attitude? Is it possible to be quiet but yet be Yes, active? it is possible. That is what we learn from the scriptures. Vasirji explaining Rama to do all the worldly transactions, whatever, to do all the royal duties, whatever is given to you as a prince, you have to. And that's how Vasirji willingly sending Ram Lakshman with Vishwamitra to fight with the demons and protect their sacrifices. You have to kill the women because they are disturbing elements. They are doing mischief in the jungle. Rakshasi, Tadika,
Mari Subao, he killed all those, didn't get any sin. Krishna killed the that क्या कहते हैं उसको, Putana who came and was feeding him. Krishna killed the lady, but he had nothing to do, not seen nothing. So they set examples before us, all these great people. They set example before us how to be in the world and not be worldly. That's why Gita gives us the example. Padma patram ivambhasa. Be in the water, but just like the lotus leaf, don't touch the water. Be in the water, don't touch it. Be in the world, but don't be the worldly. So, all those tricks and skills are given in all these scriptures. Do everything, don't claim your doership. Karmani ev adhikarahte ma phaleshu kadachana. You are, because you have a body, body cannot keep quiet, because body has some senses, and it is a body, a group of mind, intellect, etc., ego, and your prana, and your senses. So it cannot keep quiet. Let it go on doing, moving, but don't be the doer. Don't be entangled with all these group. This group is a false group, temporary group, does everything for nothing, foolish group, and made by some non-being. Prakritehe kriyamanani. The nature does it. It is by nature. It is not real. The heat is not fire, but heat cannot be other than the fire. Heat is not the fire. The body is not you, but body belongs to you. If this much is understood and hold tightly, I have the body, I am not the body. I have the body, but I am not the body. If this is understood and accepted, do anything and everything in the world. Hatta pisa iman lokana hanti na nivadhyate. Even he kills thousands in the battlefield, he never gets any sin, nor he is accused for it. Nothing is, because he is not the doer. The nature does everything. Don't be the doer, and if you can kill your eye, then you are in the world but not worldly. This eye should be made paste and it should be enjoyed. This. So tomorrow we shall see further. I have to kill the eye, or everybody else together has to kill my eye? आपके जेब में कुछ होगा तो हम कूदेंगे आपके ऊपर. नहीं, हाय, आई को मारने के लिए रास्ता है.
बहुत सारा रास्ता है, सब हर पल में हर जगह पर वही तो हम विचार करेंगे आई को कैसे मारना है। अहंकार तो मिथ्या समझो, प्रकृति का एक ही ये है ना। अरे मिथ्या हो करके भी तो ये कर रहा है, उसको मिथ्या को मिथ्या मानते हो तब तो काम बन गया। ये जो हम कहते हैं अगर भगवान सर्वव्यापक है, ये अगर शब्द सारा खतरनाक है। अगर मगर नहीं चलता है। भगवान God is all pervading. Is. If God is all pervading, don't put this if or but. These if and buts are cause for your trouble. If your mind is without ifs and buts, you are one-pointed. Whatever you accept, you should accept it. There is no either or, if or but. That is why it is so, because if there will be if or buts, then there is change. So we are trying to be changeless. So how can you apply the changing phenomena to changeless? So you have to give up all these if or but, either or, that or this, all these pairs of opposites you have to give up. Then you are at your center. You are the absolute steady state, absolute equilibrium. That's how you can keep quiet while all the senses or mind or body, let them be moving or keeping quiet. That is not your concern. You are not that. Just as you see the example, will you accept it? We conduct eye camps. Hundreds of people come. Huh? They are managed by the staff. Somebody writes their names, somebody goes and tests their sugar, BP, somebody makes the paper, and somebody takes them to particular places to examine or do something. So all these are going on. Some persons, they supply them tea, some others they make food for them, some people serve them, and everybody is engaged in doing everything, and I am sitting in the office and enjoying it. Nowadays we don't stop our class, we are doing our class here. Things are going on. So this is how, प्रकृति पुरुष का यही रिलेशन। and this is how one should not be entangled with the process or life, what is going on. No commitment, no doership. It is going on. Let it go on. Just be a seer sitting inside the inner chamber. Just look at the CCTV board, what is going on where. That is the way. That is the way to be in the world. Something goes wrong. Be a seer, not a doer. And that also is the policy in
in governance. They delegate, they distribute the responsibilities to different persons, and the manager will be sitting and looking at everyone whether they are doing the job or not. That is delegation of work. Delegate your responsibilities to your senses. Ask the eyes to see. What to see? What is worth seeing? Give him work. And ask the ears to hear whatever worth hearing. Don't waste your energy. Ask the hands to do whatever is needed. So in this way, delegate your responsibilities to your mind, intellect, prana, and your senses, and keep quiet and see. Be this witness. That's how you can live in What did you say, Swamiji? Ask the what to do what is necessary? Senses. Ask the senses? senses to do whatever is needed, whatever is really needed. Don't do unnecessary, unwanted things. Why? Because your energy will be lost. So ask the eyes, oh my dear, don't see everywhere because my energy is little. Don't waste the energy. See whatever is required to be seen. Oh smell, oh nose, do whatever you really need to. And ask the ears not to hear all the sounds. Okay? This is called your distribution, delegation of work, and be in the world, not to be worldly. And this is how yogic language says control your senses and mind. Withdraw your mind. It's the same thing is placed before you in a different way. This is how you can live in this world. What happens to the contractor now? Contractor, we shall present him something, some gift, something. We shall give him some gift. We shall satisfy him. If you think, you will get the wage, all the things. You have to think how to do, what to do, when to do. You have to think. So tomorrow we shall see further. I'll give the contractor a bottle. जी So he doesn't get up. हे भगवान. इससे जब हम विषय से जब समय और देश काल परिस्थिति दृष्टिकोण को हम अलग कर देते हैं तो जो रहा वो है चिदाकाश परमात्मा ही है. इसी को कहते हैं अवशेष. अवशेष भी कहो, एनालिसिस भी कहो, विचार भी कहो, जिस ढंग से जहाँ करना करो. हरि ओम. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. सद्गुरु भगवान की जय. सच्चिदानंद भगवान की जय. शब्द ब्रह्म की जय. सरस्वती महारानी की जय. जोगवशिष्ठ जी भगवान की जय.
हरि ओम। हे भगवान, रोज ना देरी हो जाता है।